आज हम लोग कुछ स्नैक्स ट्राई करने वाले हैं जो हम एक जापानीज कन्वीनियंस स्टोर से लाए। Now it's time to test out the ramen. Yay! The first one we're gonna try is this Yakisoba. yakisoba instant noodles. Excited. चलो मैं भी ऐसे ही खाऊंगी। It's a little on the sweeter side, but ये वाला sweet I can appreciate. It has a slight corn taste. हाँ इसमें है कौन? I would rate this 7. I would rate this a 7 too. That sounds fair. So the average rating is 7. Yeah, this is jjajangmyeon. I hope I said that right. I think it's just vegetables. आलू है, आलू मीठा आलू है, not bad. मुंह पहले बन जाता है इनको। This is way sweeter than the earlier one. I like the noodles, but it is sweet. मतलब I don't like the broth. इतना मीठा नहीं पसंद मेरे को। अपन को चाहिए तीखा। I like it. है? So I would rate this a 4. I do not like the taste too much, but the noodle का texture is pretty good. So it has that going for it. I'd rate this a 6. I didn't like it quite as much as the last one. I think it was a little sweeter than the last one, but I thought it was different. I like it. It's a 6 for me. चलो the next noodles we have is चापागुरी। देखने में सबसे सुंदर है, but unfortunately मैं नहीं try कर पाऊँगा। This is non-vegetarian, so I personally do not want to consume non-veg right now, so I'll skip this one. एक बार पहले मैं इसे try करके आपको बताती हूँ, फिर हम अपने special guest को बुलाते हैं। This has a seafood taste, जो मैंने कभी instant noodles में नहीं खाया है। मेरे लिए काफ़ी different है, and surprisingly I don't love seafood, but I like this. I'd also rate this honestly a 6 out of 10. खाने के बारे में क्या बोल रहे हैं? वो जो आपको लगे। Honest. Honest opinion. नहीं थोड़ा खा के देख लेते हैं। नहीं आप सामने खाइए वो चाहिए। और जो आपको सच में लगे वही बोलना। अरे मजाक करो, पूरा पंगा लो। Alright, I am Rajat and I am a die-hard fan of seafood. So we are here to give our review on the chapaguri noodles. Hi, I am Divya and here I am to taste chapaguri noodles. खा के देखिए आप। चलो मेरी बारी। ट्रांसपेरेंट हो गया है। बहुत ही फ्लैट नूडल है। पेट भरना है, भूखे हो तो खा सकते हो, नहीं तो कभी भी नहीं खाएंगे। सी फूड वाला फ्लेवर नहीं है, हल्का बहुत ही माइल्ड फ्लेवर है। वैसे नीचे से उठा के देखो, नीचे रहेगी तो। All right. I'm getting the feel if I put a lot of efforts. आंखें बंद करके फील कर रहा हूँ। मैं तो जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगी। As we can see here. What are your ratings out of 10? मेरी रेटिंग इस खाने के बारे में I will give 4. I'll give 1. 1. Why 1? Not even 1. 0. For me, yeah, 0. Negative. Negative. मुझे तो अच्छा लगा। वृंदा ने तो 6 दिया इसको। डिफरेंट के नाम पे। डिफरेंट के नाम पे भी नहीं, मुझे अच्छा लगा। Snack we're trying today is tteokbokki.
We've tried this before in a couple of restaurants and I really love tteokbokki. He does not. Let's try this. Yeah, I'm gonna regret this tomorrow. Cheers. This is sweet and spicy at the same time. I love it. This is very sticky. So everything that he just described is what I like about it. I love chewy food and it kind of reminds me of honey chili potatoes क्योंकि मतलब वो sweet और spicy वाला mix. I really like honey chili potatoes, so I don't know where she gets this. Also खींच के अजीनोमोटो फेंका हुआ है इसमें. I really like it. If I had to rate tteokbokki on a scale from 1 to 10, I'd rate it maybe a 2 because it's edible and it's filling. It's also supposed to be cheap in Korea. I think this is a type of their street food and if they like it, it's good for them, I guess. मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मुझे लगता है कि tteokbokki probably tastes different in Korea और maybe तेरे को वहाँ पे अच्छा लगे. But yeah, this is packaged food, so we all have our different tastes. For me, I would give this one a 6 out of 10. Fair. Mainly because I've tried tteokbokki in some Korean restaurants here as well, which have been much better than this. So yeah, 6 out of 10 for me. So the average rating is 4. The next snack we're trying today is lollipops. So we have 2 flavors. We're gonna choose randomly. Right or left? Right. This is in Japanese, so this is the Japanese snack. मेरे को ब्लू बार टेस्ट करना है. मैं वॉश करके. This is like watermelon. मुझे personally watermelon flavor इतना पसंद नहीं है, but अगर आपको पसंद है, then you definitely like this. हाय, पानी से धो दिया. Much better. So the next snack we're trying today is Yum yum. yam yam. Yam yam. It's so sweet. I really love how it's packaged. It makes it feel like it would taste really good. And cheers. What would you rate it? I would rate this one an 8. Me too. So the average rating is 8 out of 10. I'd personally prefer the vanilla maybe, but yeah, this is great too. मैं बोल रही थी vanilla लेने को. तूने बोला था strawberry तो. Vanilla मैंने बोला था average के लिए. नहीं. हाँ, चॉकलेट और वनीला का स्ट्रॉबेरी था. तूने स्ट्रॉबेरी उठाया. हाँ, मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए, but कहा- इन दोनों में से चूज कर लो, तो तूने बोला स्ट्रॉबेरी. तूने वनीला कैसे बोला मतलब इसका? मतलब उन दोनों में से चूज कर लो क्योंकि चॉकलेट नहीं चाहिए. Exactly, that doesn't mean vanilla. But you also chose strawberry. So the next snacks we got are these. This is onion rings and this is turtle chips. अच्छा नहीं लगेगा. लगेगा. So the aftertaste is amazing. This reminds me of my childhood. बचपन में जो white वाली rings आती थी हाथ में पहन के खाते थे. So the flavor is Mexican line corn chips. This is just 60 rupees. मतलब ठीक है, that's a lot for chips, but बाकी सबसे कम है. ये इंडियन है क्योंकि इस पे MRP रुपीस में लिखा. I'd give this a 9 on 10. Same. कॉपी करते रहे मेरे सबसे. मैंने पहले बोला था लास्ट वाला. तो तूने बोले तो उससे पहले मैंने सबसे कॉपी करती. Fine, मैं चलूँगी 8.5. Average rating 8.75. So the next snack is onion rings. I love this. I don't. प्याज के पकौड़े. वैसा टाइप का आपका टेस्ट है. बहुत अच्छा describe किया. Rating wise, I'd give this a 3 maybe. The texture is pretty fascinating, but the taste isn't. I'd give this a 7. So guys, that's the end of our video. No. So guys, that concludes our journey into the convenience store food of Delhi. If you like the video, do give a subscribe to the channel. Drop a like down below. Like and subscribe. Black bean है. मुझे अच्छा लगा बिकॉज मुझे ब्लैक बीन ज़्यादा अच्छा लगता है. इसमें फ्लेवर फील भी कर रहा है. मैं तो पहली बार खाया.